बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स अबाउट हाइड्रोजन एटम्स। सो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 1, शो दैट द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम इज नॉर्मलाइज्ड। ये हमारे पास हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है। This one show principal quantum number n, this show orbital quantum number L, and this show magnetic quantum number m. So the ground state wave function for hydrogen atom is this one. Now हमने शो करना है कि ये जो वेव फंक्शन है ये हमारे पास एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है और हमने इस इंटीग्रल का यूज़ करना है when we derive that the wave function is normalized. So the normalization condition in case of spherical polar coordinate is this one. This is the normalization condition in case of spherical polar coordinate system, where this show conjugate of the wave function and this is the given wave function. So हमने इसका कंजुगेट लेना है, मीन इसको स्टार लेना है। तो इसमें हमारे पास कोई भी नंबर इस तरह नहीं है जो कॉम्प्लेक्स हो, तो इट मीन्स इट्स कंजुगेट एज वेल एज इज गिवन फंक्शन साई बोथ आर सेम। करेक्ट। अब अगर ये फंक्शन हमारे पास नॉर्मलाइज है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स दिस इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू 1। सो हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन नॉर्मलाइज जो फंक्शन है, तो जाहिर बात है अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज है तो फिर इसका जो ये इंटीग्रल बनता है दिस शुड बी इक्वल टू 1। सो इस एक्सप्रेशन में हमने जस्ट साई 100 स्टार की वैल्यू को पुट करना है और साई 100 की वैल्यू को पुट करना है। सो बाय पुटिंग वैल्यूज वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। ना अगर इस एक्सप्रेशन में देखें तो ये वाला टर्म जो है और ये वाला टर्म हमारे पास जो है सेम है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें मीन्स 1/2 पावर 1/2 को ऐड करें, so these two become this one and the remaining term will be this one. अब याद रखिए यहाँ पर हमारे पास तीन इंटीग्रल है। द इंटीग्रल लिमिट goes from 0 to infinity for r and the limit goes from 0 to pi for theta and this is the limit goes from 0 to 2 pi for azimuthal angle pi. सो अगर हम इस इंटीग्रेंड को देखें तो इसमें हमारे पास आर भी है, थीटा भी है और पाई भी है। तो इस इंटीग्रेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0 to infinity r² e पावर -2r और r0, ये वाला और ये वाले को हम ऐड करेंगे सो बिकम दिस वन एंड 0 to पाई द लिमिट साइन थीटा डी थीटा एंड 0 to 2 पाई डी पाई। मीन्स इस इंटीग्रेशन को हमने तीन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस इंटीग्रेंड में 3 वेरिएबल है। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी ऑब्टेन दिस वन। बट अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, इस रेडियस वाले इंटीग्रेशन को देखें और इसको हम इसके साथ कंपेयर करें, सो इट मीन्स x विल बी रिप्लेस बाय r, n रिप्लेस बाय 2, a रिप्लेस बाय 2 ओवर a0 एंड x बाय r। सो अगर इस दोनों को हम कंपेयर करें सो वी ऑब्टेन दिस इज आवर n 2 + 1 gamma डिवाइड बाय 2 ओवर a0 is our a power n + 1. So by compare this to this one we obtain this expression. Similarly अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें so we obtain minus cos theta limit 0 to pi, और इसका इंटीग्रेशन करें we obtain pi 0 to 2 pi. Now we know that gamma n + 1 is equal to n factorial. सो ये जो टर्म है हमारे पास गेमा 2 + 1, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पिक्टोरियल 2 पावर 2 + 1, सो इट बिकम्स 8
और ए नॉट का जो पावर है वो भी हमारे पास 3 है, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा. सिमिलरली बाय पुटिंग द लिमिट माइनस cos upper limit minus cos lower limit, this convert to 2. And similarly this one, phi upper limit minus 0 lower limit, this become this one. So by simplifying this expression, this 2 pi या 4 pi cancel to phi, mean this 2 multiplied by 2 multiplied by 8. So this 8 cancel to 8, this a naught cube cancel to a naught cube, and this pi cancel to pi. So this expression become 1. So it means the given wave function is a normalized wave function because its integration approach to 1. Now the next problem is this one. Find the expectation value of distance between electron and proton of hydrogen atom where the normalized wave function for hydrogen atom is this one. ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट का हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट का नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है और हमने मालूम करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू आर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉर हाइड्रोजन एटम. सो if this wave function is normalized, then the expectation value are defined as integration given wave function star, then position operator psi 100 and r square sin theta d pi dr. So this is the expectation value for any operator in case of spherical polar coordinate system. So putting the value of psi star and r operator is equal to r, and putting the value of psi 100 r square sin theta d pi dr as it is. Again हमने spherical polar coordinate को use करना है. So the limit for r is 0 to infinity, the limit for theta is 0 to pi, and the limit for phi is 0 to 2 pi. इसकी वैल्यू को हमने पुट करना है this one. अब अगेन अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें और आर का जो टर्म है उसका सेपरेट इंटीग्रेशन ले लें, थीटा का सेपरेट इंटीग्रेशन ले लें और फाई का सेपरेट इंटीग्रेशन ले लें, सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन, दिस वन. अगेन अगर इस इंटीग्रेशन को हम कंपेयर करें इस गिवन इंटीग्रल के साथ, सो हियर x is r, n is our 3 and a is our 2 by a naught. So this expression can be written as gamma 3 plus 1 divided by 2 over a naught power 3 plus 1. And we know that the integration of this for limit 0 to pi is 2 as from the previous problem. Similarly, the integration of this is 2 pi. So this expression can be written as this one. Again, we know that gamma n plus 1 equal to n pictorial. So इस gamma 3 plus 1 की जगह हमने पुट करना है 3 pictorial 2 power 4 और इस n0 power 4 को हमने ऊपर ले जाना है नोमिनेटर में. So by simplify this step by step we obtain this one. So this is the expectation value for position between electron and proton for hydrogen atom. Now problem number 3. Find the expectation value for potential energy per electron of hydrogen atom which ground state wave function is this one, and this is a normalized wave function as we know from problem number 1. So the expectation value for potential energy equal to this one in case of spherical polar coordinate system, but this term equal to 1, so we put here 1, correct, and psi 100 value put करना है, and potential energy हमारे पास बराबर होता है minus e square divided by 4 pi epsilon naught r. So this is our potential energy operator, and potential energy operator in case of
हाइड्रोजन एटम इक्वल टू दिस वन। सो इस वी की जगह, इसकी जगह और इसकी जगह हमने वैल्यू को पुट करना है। सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। Again, if we simplify this expression, we obtain this one. Again, अगर इसी इंटीग्रेशन को हम कंपेयर करें इस फॉर्म से, सो वी obtain gamma 1 + 1 डिवाइड बाई 2 और n naught पावर 1 + 1। अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करें, एंड वी नो दैट gamma 1 + 1 is equal to 1, because the generalization between generalization between gamma function and pictorial is this one, gamma n plus 1 equal to n pictorial. So here n equal to 1, so gamma 1 + 1 equal to 1. So अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, so this whole expression convert to this form, this one. यहाँ पर ये 4 पाई जो है हमारे पास, दिस 4 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 2 पावर हमारे पास 2 है, तो ये 4 बन जाएगा और पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, और ये ए नॉट स्क्वायर जो है ऊपर चला जाएगा। सो ए नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई ए नॉट क्यूब बिकम दिस वन। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। कैलकुलेट द साइज दैट इज एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर होल 1/2। हमने इसको मालूम करना है फॉर हाइड्रोजन एटम। द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम इज दिस वन। नाउ टू फाइंड आर स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वी यूज एक्सपेक्टेशन वैल्यू फार्मूला आर स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार आर स्क्वायर साई इनटू डी वी। हियर डी वी इज ए volume element. In case of spherical polar coordinate system, this dv equal to r square sin theta d theta d pi and dr. So this can be written as 0 to infinity, 0 to pi, 0 to 2 pi in case of spherical polar coordinate system. psi 1 0 0 की वैल्यू को पुट करना है, और यहाँ पर भी psi 1 0 0 की वैल्यू को पुट करना है, और आर स्क्वायर को एज इट एज रहने देंगे, और डी की जगह हमने पुट करना है आर स्क्वायर साइन थीटा डी पाई डी आर, और इसको सिंप्लीफाई करें। सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। नाउ अगेन इस इंटीग्रेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू 2 एंड 0 to 2 पाई डी पाई इक्वल टू 2 पाई। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है किस टर्म की, ओनली रेडियल टर्म की, दिस वन की, दिस वन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें बाय यूजिंग दिस कंडीशन, वी ऑब्टेन आर की 4 इक्वल टू 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 2 और ए नॉट पावर 5। दिस कैन बी रिटन एज दिस वन, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं गेमा n + 1। सो अगर इसी इंटीग्रेशन को हम इस डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व करें, सो दिस एक्सप्रेशन कन्वर्ट टू दिस फॉर्म 4 ओवर ए नॉट क्यूब एज इट इज, और इस सर्कल वाला जो इंटीग्रेशन है ये हमारे पास बराबर होगा इसके, बाय यूजिंग दिस ट्रिक। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 3a0 स्क्वायर। नाउ अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, सो दिस एक्सप्रेशन कन्वर्ट टू दिस फॉर्म। This is our required result. Problem number 5. If the inter-electronic repulsion in helium atom is ignored, what would be the ground state wave function for helium atom, where the ground state energy for hydrogen equal to this one, and the ground state wave function for hydrogen atom equal to this one. So we know that in case of helium, the nucleus having 2 proton and 2 neutron, as well as the nucleus having 2 electron.
if we ignore the repulsion between this electron and this electron, and we assume that this electron move around the nucleus and this electron also move around the nucleus, so it means the helium atom is a two particle system, means it is a two particle system, or its two electrons behave like two hydrogen atom. So the resultant wave function for this helium nuclei will be what? The resultant wave function for the helium nuclei will be the product of wave function for this electron and the product of wave function for this electron. That is psi equal to psi 1 R1 and psi 2 R2, where R1 show the position of this electron with respect to the nucleus, that is R1, and R2 show the position of this electron with respect to this nucleus, that is R2. So psi 1 R1, the ground state wave function for this electron is this one. Similarly, the ground state wave function for this electron is this one. So इस दोनों को हम यहाँ पर put करेंगे. So we obtain this expression. So this is known as the wave function for helium atom if we ignore the repulsion between the helium electron. Problem number 6. At time t equal to 0, the wave function per hydrogen atom is this one. ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन एटम का एक वेव फंक्शन है, which is the linear, this is the hydrogen atom wave function, which is the linear combination of various wave function per hydrogen atom, with the subscript or values of the quantum number n, l, m. This one show n, 0, l, and m show 0. What is the expectation value for the energy of this system, and what is the probability of finding the system with L equal to 1 and m equal to 1 state? As the expectation value of the energy defined as this one in Dirac bracket notation, but here the wave function is normalized, so the denominator equal to 1. Now putting the value of psi and then Hamiltonian operator and then psi, where this is our psi. अगर इसको हम डिराक ब्रैकेट नोटेशन में लेके तो इसका किट हमारे पास ये होगा, सॉरी ब्रा ये होगा हमारे पास, दिस वन. सिमिलरली इसका किट हमारे पास क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का हमारे पास किट होगा इक्वल टू 1/10 रूट into 2 psi 1 0 0 plus psi 2 1 0 and so on. सो हमने यहाँ पर डिराक ब्रैकेट नोटेशन को यूज़ करना है, इस वैल्यू को पुट करना है हमने ये, और हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है उसको हम एज इट इज रहने देंगे, और ये हमारे पास जो है वो फंक्शन इसको अगर हम कैट के फॉर्म में लिखे तो ये इस तरह बन जाएगा, दिस वन. Now we know from Schrodinger wave equation that Schrodinger wave equation, time independent Schrodinger wave equation in Dirac bracket notation is psi equal to E psi. This is the eigenvalue equation where it shows the Hamiltonian operator. This is a eigenstate, this is eigenvalue and this is eigenstate. So अगर हम यहाँ इस पर जो है 2 psi 1 0 0 पर अगर हम h को ऑपरेट करें, so we obtain 2 and h psi 1 0 0 equal to E1 psi 1 0 0. इस तरह अगर इस h को हम इस पर ऑपरेट करें, so we obtain E2 psi 2 1 0 0. इस तरह अगर इस h को हम इस पर ऑपरेट करें, so we obtain square root 2 E2 psi 2 1 1. और इस तरह अगर इस h को हम यहाँ पर ऑपरेट करें, so we obtain
इस तरह H3 psi2 1 minus 1, so this become 3 constant as it is। और हमें मालूम है कि ये n जो है ये हमारे पास यहाँ पर 2 जो है ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एनर्जी आइगन वैल्यू जो होते हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, तो ये बन जाएगा E2 और psi2 1 minus 1। सो अगर इसी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर ऑपरेट करें ईच एंड एवरी टर्म पर, सो वी ऑब्टेन दिस वन। नाउ using the orthogonality condition, that is psi n equal to 1 when m equal to n and 0 when m not equal to n। सो अगर इस टर्म को हम इस से मल्टीप्लाई करें, सॉरी इसके साथ मल्टीप्लाई करें बाय इनर प्रोडक्ट, सो दिस बिकम 2 into 2 4a1, because we know that psi 1 0 0 into psi 1 0 0 equal to 1 according to orthogonality condition। सिमिलरली अगर इस टर्म को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वो फंक्शन और ये वो फंक्शन हमारे पास डिफरेंट है, सो अकॉर्डिंग टू क्रोनिकल डेल्टा दिस इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर इस टर्म को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो फंक्शन डिफरेंट है। सिमिलरली अगर इस टर्म को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास 0 आ जाएगा। नाउ अगर इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करें इस टर्म के साथ तो ये 0 होगा, क्योंकि ये फंक्शन और ये डिफरेंट है। लेकिन अगर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें सो वी ऑब्टेन E2, सिमिलरली के साथ मल्टीप्लाई करें 0 और 0। सिमिलरली अगर इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो 0 हो जाएगा, इसके साथ भी 0, क्योंकि वो फंक्शन डिफरेंट है, एंड बाय क्रॉनिकल डेटा दिस वन इक्वल टू 0। अगर इस एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करें इस एक्सप्रेशन के साथ सो वी ऑब्टेन 3E2। So simply multiply this expression to this one by using chronicle delta this condition, we obtain this one 1 over 10 4E1 plus E2 plus 2E2 plus 3E2, or this can be written as this one। Now we know that for ground state of hydrogen atom E1 equal to minus 13.8 electron volt, and for first excited state the energy is minus 3.4 electron volt। so यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करें E1 की जगह और E2 की जगह, so we obtain this one। so this is known as the expectation value for this state of hydrogen atom। Now the second part of the question, what is the probability of finding the system with L equal to 1 m equal to 1। अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम तो हमने ये प्रोबेबिलिटी को मालूम करना है कि यहाँ पर ये हमारे पास L equal to 1 m equal to 1 है, कि इस स्टेट में इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस स्टेट में इस पार्टिकल की रहने की प्रोबेबिलिटी को हमने मालूम करना है। फॉर दिस वन हियर this to n, 1 means L and this one means m। so now we need to find out the probability for the particle in this state, which resultant wave function is this one। simple means the probability is given by, हमने सिर्फ और सिर्फ जो है हमने क्या करना है, इस स्टेट से मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन L equal to 1 and m equal to 1।
सो हमने क्या करना है, ओनली दिस टर्म को, जिसका कोएफिशिएंट हमारे पास ये है, इसको अपने साथ मल्टीप्लाई करना है. सो वी ऑब्टेन this one, that is P is equal to 2 over 2 by 10 root and its corresponding wave function is psi 211 multiplied by 2 by 10 square root into psi 211. So this become 2 over 10 and this side 211 and side 211, this approach to 1 according to canonical delta. So the probability of finding the particle and this 211 are L equal to 1 and M equal to 1 state is what? 1 over 5. Thank you.